Assalamu alaikum everyone, welcome back to Babe on Wheels. This is Amar and this is the third vlog. और well, इस vlog के अंदर हम बड़ी बातें करने वाले हैं, ज़्यादातर बातें करने वाले हैं because this is all about maintaining your old slash vintage car. And मैंने भी वैसे सही बरसात के सीज़न में चूज़ किया vlog बनाना. It's so hot. So about this that we move the stage to a better place. How about that? So here we go. Right now, so we're in my other car और इसमें AC है. So yeah, this is the problem with new cars. इनके beeps और whistles नहीं ख़त्म होते. Anyways, so well, this vlog is all about this episode that is all about how to maintain an old car. Maintain का मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास एक पुरानी बनी हुई विंटेज गाड़ी है और उसका ख्याल कैसे रखना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हमारा मसला ये होता है कि हम लोग इस तरह की गाड़ी रख लेते हैं, उसके बाद फिर महीनों खड़ी कर रखते हैं, उसके बाद बस बार बार से धो लिया एंड दैट्स इट. बट इट्स ऑल अबाउट द माइनर डिटेल्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने एक गाड़ी बनाई है, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़ एक्चुअली टेक केयर ऑफ इट. हाउ? दैट्स द $1 million क्वेश्चन. सो आई विल सेगमेंटाइज इट एंड उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि क्या करना है. So step number 1. First rule of keeping a vintage car. That is कि आपने उसको एक ऐसी जगह पे खड़ी करना है जहाँ पे ज़्यादा बारिश ना होती हो, डायरेक्ट सनलाइट ना लगती हो, यानी कि इतना टेम्परेचर डिफरेंस ना हो, वो भी डायरेक्ट. ठीक है, आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे शेड हो एंड सो दैट आपका जो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं वो उसको इफेक्ट ना करें. स्टेप नंबर 2, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. The thing is that you have to keep a calculation. अब आपने क्या करना है कि if you're keeping the car standing still for a long time, तो आपने at least उसको इस तरह रख लें within एक हफ्ते के अंदर उसको 2 दफ़ा मिनिमम स्टार्ट करें. एंड आपका कैलकुलेशन ही होनी चाहिए कि जी अगर आप उसको समझें 3 दिन या 4 दिन बाद स्टार्ट करें, सो एटलीस्ट उसको 5 से 7 मिनट तक उसको गाड़ी को स्टार्ट रखें. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू कीप एवरीथिंग इन चेक कि जनाब जी अच्छा गाड़ी स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही, बैटरी डेड तो नहीं हो रही, साथ में उसका ऑयल लेवल्स, उसके फ्यूल लेवल्स, एवरीथिंग आपने चेक करना है. द थर्ड स्टेप कि अब गाड़ी आपने चलानी भी है. इट्स नॉट लाइक दिस कि जी आपने गाड़ी खड़ी कर दी, 6 महीने गाड़ी खड़ी हुई है एंड उसको जंग लग रहा है, उसको ये लग रहा है. व्हाट यू हैव टू डू इज़ जब आप गाड़ी रनिंग में रखते हैं गाड़ी सही रहती है. जितना आप उसको खड़ा करेंगे उतना वो है. अब ये इसकी रीज़न आई रियली डोंट नो, इट्स साइकोलॉजिकल आई गेस, बट गाड़ी चलती रहती है तो वो ना जंग पकड़ती है ना उसमें प्रॉब्लम्स निकलती है. तो मेरी ये कैलकुलेशन है, द वे आई कीप द पैसेट इज़ बेसिकली मैं उसको महीने में एटलीस्ट 10 to 15 किलोमीटर्स चलाता हूँ. स्टार्ट की अच्छा, अब ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टार्टिंग के जो आपके 2 दिन आपने समझे लेट्स इट्स ट्यूसडे और ट्यूसडे एंड सैटरडे, वो तो आपने चले फिक्स कर लिया, लेकिन इन डेज़ के अलावा आपने गाड़ी को चलाना है. मे बी आफ्टर 10 days, मे बी आफ्टर 5 days, व्हेनेवर यू हैव द टाइम. खाली गाड़ी को एटलीस्ट अपनी गली से बाहर निकालें, थोड़ा अपने सेक्टर में घूम लें या वेयरएवर यू लिव, आप उसको थोड़ा सा चलाएं. एंड द परफेक्ट टाइम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम लोगों का मसला ये होता है हमारे पेंट्स they're very expensive और हमने बड़ी मेहनत से बनाए होते हैं. So the best time to actually drive your cars is either in the morning, like early morning, जब ना रश होता है, ना बंदा, ना कोई, and the temperature is just perfect. ठीक है, और आप especially in the summers, winters में तो of course that varies, but जो आपका perfect temperature है आप उस पर चलाएं, at least 10 kilometers चलाएं और उसको दबाएं नहीं, normal चलाएं, maybe just a little sprint at the end, but not more than that. Right, so tip number 4, you have to keep a check on all the liquids. It's very important. Liquid से मेरी मुराद ये है कि जी ऑयल लेवल्स, आपके फ्यूल लेवल्स, आपके वाटर लेवल्स, रेडिएटर में कितना पानी है, ट्रांसमिशन ऑयल. सो आप एक नोट पैड रखें, उसमें आप बेसिकली देखो टाइमली बेस चेक करते रहें. बिसाइड्स द माइलेज
लेकिन आप टाइमली बेस भी ऑयल वगैरह सारा चेंज कराएं. बिकॉज फॉर एग्जांपल इन माय पसाट आई नेवर जैसे कहते हैं ना रीच द अमाउंट ऑफ माइल्स जिसमें या किलोमीटर्स जिसमें आपने ऑयल चेंज कराना है, बिकॉज आई ड्राइव इट सो लेस. So I basically change the oil after every 6 months. It's very important कि जी आप timely base भी रखें. Anyways, whenever you start the car, you actually have to check कि जी आपका oil level सही है, आपका fuel level सही है, आपका water level सही है. And transmission oil का बेशक आप after a month check कर लें, whatever is comfortable for you, आप वो कर सकते हैं. But you really need to keep the check on the liquids, because अगर liquids में कहीं कमी आ गई तो भाई आपका सारी मेहनत down the drain. Because liquids, for example, oil अगर कम हो रहा है, आपने गाड़ी चला दी, आपका इंजन सीज हो सकता है. अगर आपका पानी जिसे कहते हैं रेडिएटर में नहीं है, कूलेंट नहीं है, और आप गाड़ी हीट अप हो रही है, आपकी हेड गैस्केट उड़ गई, सिलेंडर्स भी उड़ सकते हैं. There are loads of problems that can come, or transmission can break regarding the transmission oil, so you have to keep a check on that. और अगर आपका फ्यूल नहीं है, आप जा रहे हैं जनाब जी, फिर आपके जनाब you have to get the whole system bleed, and so it's a hassle. So best part ये कि जी आप अपने oils पे check. Tip number 5, किसी को गाड़ी देने की जरूरत. Never give your car to anyone. I mean anyone. ठीक है. You know how important it is to you, but others may not, right? So जो आपकी गाड़ी है, अब फॉर एग्जांपल अगर कोई enthusiast है जिसको आप जो जानता है जनाब जी कि वो गाड़ी किस तरह चला सकते हैं, everything, that's an exception, but never give your cars to anyone. It's very important. कोई खुदा ना हादसा मार दे, कोई उस तरह केयर ना करे जिस तरह आप करते हैं. So this is one of the most important steps, is do not rely on anyone else to do all the work. You actually have to do it yourself, first of all, and second of all, do not give your car to anyone. Full stop. Baba ji has spoken. Next step, you have to take care of the paint and everything. ये काफ़ी important step है. Now, for my cars, I have a certain banda who comes to my house and washes all my cars. And मैं कभी भी ड्राई कपड़ा नहीं लगवाता. अपने जितने भी लोग हैं जो सपोर्ट स्टाफ होते हैं या हेल्पर्स होते हैं, आप प्लीज़ उनसे कहें कि प्लीज़ डू नॉट वॉश द कार विद नॉर्मल क्लॉथ्स एंड एवरीथिंग. देयर इज़ अ होल प्रोसीजर फॉर दैट. आई विल बी मेकिंग अ व्लॉग रिगार्डिंग दैट. आई विल कॉल बिलाल माई फ्रेंड, and he is from ProTech, and this is again not a sponsored vlog or anything. He's just a very good friend of mine, and he does immaculate work. So whenever I have to get the car washed, I actually call him up, और फिर वो लाइन से गाड़ियाँ हमारी होती हैं वो धोता है, and he does a wonderful job. He knows how to protect the paint of your car. तो जो मेरा पेंट है Passat के ऊपर, दैट्स आई थिंक उस पेंट को 6 साल हो चुके हैं, and it's still in its mint condition, is because कि Bilal has been protecting it, and I don't just go to anyone and go like wash my car, और जितने भी helpers होते हैं किसी से मैं हाथ नहीं लगवाता. I just keep it to Bilal or any professional जिसको पता है basically क्या करना है. But I shall be making a vlog regarding that as well. And सबसे important thing, do not, and I repeat, do not compromise on quality. ठीक है, आपने you have to put the oil, the liquids, the parts, whatever that you needs replaced, please put that, either it's in its original condition or either it's in good condition, but please do not cheapen out. ये बहुत important है. लोग पैसे बचाने के लिए ना थोड़ा सा ये शॉर्टी सा काम करा देते हैं, लेकिन आपने पैसे नहीं बचाने, बिकॉज दिस इज समथिंग पैशनेट. सो ये गाड़ी कौन बार बार थोड़ी बनाता है, तो वंस इन अ लाइफ टाइम बनानी होती है. सो प्लीज़ डोंट चीपन आउट. अगर कितना 2-3 हज़ार रुपये का फ़र्क है, चलो यार 10,000 रुपये का फ़र्क है, लेकिन जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको डू नॉट वेस्ट. सो आइदर गो फॉर ओरिजिनल OEM पार्ट्स और आइदर गो फॉर ओरिजिनल लिक्विड्स. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन पाकिस्तान देयर इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम. Not every gas station has original oils or original fuel. ये आपने basically it doesn't matter about the brand. What you need to do is actually find the authorized dealer of any oil or any transmission oil or any coolant, and just stick to that.
ٹھیک ہے, اب آپ نے ایک آئل پہ گاڑی کو سیٹ کر دیا ہے, ناؤ یو ہیو ٹو کیپ آن ڈوئنگ اٹ. بسائڈ دا ٹیمپریچر چینج, وہ آپ ظاہری بات ہے 20-50 یا 5-20 یا 10-50 10-40 واٹ ایور دیٹ از ریگارڈنگ دا ٹیمپریچر, یو کین ڈو دیٹ, بٹ ڈو ناٹ چینج دا برانڈ. ایک دفعہ آپ سیٹ ہو گئے, آپ اس پہ سیٹ ہو گئے. سو کیپ آن ڈوئنگ دیٹ, اسپیشلی ریگارڈنگ دا پیٹرول ایز ویل, بیکاز دیر از اے ہیوج پیٹرول ویریشن ایٹ دا گیس اسٹیشن. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, ایک دفعہ کسی گیس اسٹیشن کو آپ نے جناب جی چوز کر لیا, اسٹک آن دیٹ اینڈ ٹرائی ٹو گیٹ ٹو دا اوریجنل گیس اسٹیشن, جو فرینچائزز نہ ہو, جو ایک کمپنی آپریٹڈ ہو. So now here's a list of things that you really, really need to keep in the car. Extra fuses, extra petrol, extra wires, battery water, a pint of oil, a stepney, extra tire ke andar hawa, the car's manual, the car's oil change log, and other things jo abhi mujhe bhul gaye lekin main usme add kar dunga editing mein. Right, so these are the steps that you have to take regarding your baby or vintage car. And I'm sorry regarding the voice, because this is a hybrid and kabhi on hoti kabhi off hoti hai because the AC is running. So yeah, and but hey, I'm learning, so let's see what happens. And well, so I hope this was informative for everyone, and if there's any question, any specific question that you guys need to ask, just let me know. I think because of the new channel, the comment box is disabled. I think it's going to take 30 days, but once everything is set, so you can. But right now you can email. The email will pop up somewhere here, and you can check that out and email me any questions. And if there's any car that you want me to vlog about, anything specific, just let me know and I will do that. If you have a cool car, just let me know. I shall come over and make a vlog with you. So anyways, this is me, Baba G, signing out, and till the next episode, enjoy. Allah Hafiz.